heard of it. There's a steel plant there. And my father, when he was 16 years old, he had gone there along with his elder brother in search of some job because his father had passed away. And he then set up, उसने एक छोटा business set up किया. पहले काम किया, and then he earned some money, and then he set up a small shop where he used to sell wool and books. He used to get books from नई सड़क यहाँ पे, and वहाँ पे वो books बेचते थे और लुधियाना से wool लेके आते थे. वर्धमान ओसवाल आपने सुना होगा, तो उसकी ऊन लाके वहाँ पे वो रॉड किला में बेचते थे. तो मुझे याद है जब मैं छोटा था तो आई यूज्ड टू सिट ऑन द कैश काउंटर ऑल्सो. तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सिटिंग ऑन द काउंटर एंड getting cash and selling, and first experience. But 1984, if you remember, 86 riots happened, and at that time our shop was burned down. And it was the only big shop in that area. उसके बाद हमारी जो फैमिली की सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन वाज नॉट वेरी गुड फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स, एंड हम दिल्ली आ गए उसके बाद. सो अर्ली 90s we came to Delhi. I can tell you, is to live in West Delhi. I don't know if any one of you is from Moti Nagar or Rojori Garden or those areas, Janakpuri. So we used to live in Moti Nagar and Sudarshan Park in a one-room house. And my father used to say that all these things have happened. It's fine, but there is only one thing, one asset you can build, and that is education. And मैं मैथ्स में अच्छा था बचपन से, मेरे 100 में 100 आते थे क्लास 6-7 से, और मेरा ड्रीम था कि मेरे को IIT जाना है. तो मैंने पढ़ाई की, आई स्टडीड हार्ड, आई वेंट टू IIT एंड आई गॉट थ्रू IIT दिल्ली. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा मैंने वहाँ पे. एंड देन बीइंग द एल्डेस्ट इन द फैमिली, एक्सपेक्टेशन वाज दैट आई विल गो इनटू अ जॉब and earn a lot of money for the family. And so I did that. I went to Bangalore. I started my first job at Intel. तो Intel में मैं चिप डिज़ाइन का काम करता था. वहाँ पे 3 साल करने के बाद मैंने एक और कंपनी में काम किया जिसके बारे में आपने सुना होगा रिसेंटली, NVIDIA. So I worked at NVIDIA for 1.5 years. वहाँ पे मेरे को ESOPs भी मिले थे, वो मैंने बेच दिए. That is the biggest mistake I did. तो जब मैं इन कंपनीज में काम कर रहा था तो आई रियलाइज आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड. आई एम अ टेक्नोलॉजिस्ट एट हार्ट, और आज भी हालांकि मैं कंपनी का CEO हूँ, बट व्हाट एक्साइट्स मी मोस्ट इज हाउ टू बिल्ड न्यू स्टफ, कि क्या नया लेके आ सकते हैं टेक्नोलॉजी से, कैसे लेके. मतलब मैं आपको आई डोंट नो कितने कंपनी के ऐसे प्रमोटर्स हैं CEO जिन्होंने खुद कोड लिखा होगा. तो मैंने कोड लिखा है पहले मोबिक्विक का, सबसे पहला कोड मैंने खुद लिखा है. तो वहाँ से लेके मोबिक्विक की स्टोरी स्टार्ट हुई. मैं उपासना को मिला, एंड जैसा कि उसने बताया कि आइडिया बहुत सिंपल था कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स तो होंगी बिकॉज इंटरनेट इज ग्रोइंग, एंड इंटरनेट ग्रो कर रहा है. तब सिर्फ IRCTC होता था और आई थिंक फ्लिपकार्ट होता था, बट इसके अलावा आजकल जो भी आप कर रहे हैं वो सब कुछ नहीं था, एंड स्मार्टफोन्स तक नहीं थे, there were no smartphones. So we started that time. I think we were very foolish, obviously, and being engineers, तो मेरा ये व्यू था कि वेबसाइट बना दो, अपने आप आ जाएंगे कस्टमर्स, फिर बिजनेस बन जाएगा. And then slowly we learned everything from scratch. And Architect में we have built now a sizable business which is very fast growing. And in that business, business has also evolved over many years. The market has evolved, but business has also evolved. And I want to put that in front of you because you may not know how we think about the business. The first part of the business, first half of the business, is very simply about payments. So digital payment जो है इंडिया में, you've seen how it has grown over the last many years. पहले digital wallet आए, फिर उसके बाद UPI आया, UPI ने आके digital wallet को disrupt कर दिया, and then again now wallets are coming back and mobikwik is leading the way. And why? So in digital payments we have obviously all the use cases that you can think of. We have built a sizable customer base and a decent brand, I would say, which stands for trust.
and customer experience. So you can use mobikwik app for all kinds of transactions, whether it is online transactions, bill payments, scan a QR code, UPI, send money to anybody, receive money, and we have a sizable merchant base also, which is more than 4 million. And starting with online, all the merchants, if you go in the wallet section, you will find mobikwik. Even in the UPI section, now you will start finding mobikwik. And even small kirana stores, now we have started expanding in a big way, both with QR codes and soundbox and EDC machines. So our overall business is actually core foundation is that of payments. But I think one question you can ask, एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि इसमें तो बहुत सारे प्लेयर हैं और इसका कंपटीशन है, तो what's so special? आपका what's so special? So I'll come to that. I think one of the things that we have done is we always believe कि digital payments, especially small value digital payments, should be done via wallet. And UPI जब हुआ तो UPI से लोगों ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट से हर दिन की ट्रांजेक्शन करनी शुरू की. वो एक अच्छा सोल्यूशन है, बट अगर आप UPI यूज करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने एक अलग अकाउंट रखा हुआ है सिर्फ UPI ट्रांजेक्शन करने के लिए. बिकॉज आप मेन अकाउंट से, प्राइमरी सेविंग्स अकाउंट से जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो यू आर एक्सपोजिंग योर मेन बैंक अकाउंट टू ऑल काइंड्स ऑफ रिस्क. प्लस आपकी जो बैंक स्टेटमेंट बनती है दैट इज 1 किलोमीटर लॉन्ग. सो मोबिक्विक ने उसके ऊपर इनोवेशन किया एंड हैज बिल्ट दिस product called Pocket UPI, which is our flagship product. And what is Pocket UPI is nothing but wallet. So instead of doing all your payments from bank account, ideally all your small value payments should be done from a wallet, which mobikwik provides. And mobikwik is a leader in this space. It is the largest wallet now on all metrics. And the good thing is that wallet you can use everywhere. You can use it on UPI, you can use scan and QR code. आप इसमें पैसे ले सकते हो, इसमें आप पैसे भेज सकते हो किसी के बैंक अकाउंट में, किसी के बैंक अकाउंट से ले सकते हो. एंड इन अ वे आप अपना वॉलेट और अपना बैंक अकाउंट सेपरेट कर सकते हो. एंड दिस इज मोबिक्विक्स बिग डिफरेंशिएटर एंड इट इज गोइंग वेरी फास्ट. In fact, you might have seen some ads about it also. So we call it Pocket UPI without a bank account. In this business, our scale is continuing to grow, and if you see the numbers, in terms of, there is a lot of competition. बहुत competition है इस space में, बहुत सारे players हैं, but mobikwik continues to grow, and we see the growth in users. If you see the registered user growth, every year we've easily added 15-16 million users. 1 से 1.5 करोड़ यूजर हर साल ऐड हो रहे हैं, और इस साल के फर्स्ट 3 मंथ्स में ऑलरेडी 50 लाख यूजर ऐड हैं. Even when you look at merchants, 40 lakh merchants, say we have added this year, just in one quarter we have added almost 200,000 merchants. 2 lakh merchants एक ही quarter में add हुए. And if you look at the spends on the platform, again, that is growing significantly. Despite everything else, mobikwik के ऊपर जो कस्टमर पेमेंट्स करते हैं, उसकी वैल्यू हर साल ग्रो कर रही है. FY22 में ये 17,000 करोड़ थी, FY23 में 20,000 करोड़ थी, FY24 में 38,000 करोड़ थी, और इस साल 3 महीने में ये 25,000 करोड़. तो इसको नंबर को आप एक्सट्रापोलेट करेंगे, if you extrapolate this is almost 3x of what we did last year. And this is all thanks to the fact that mobikwik, again, for payments, it's a known brand. People like to use our wallet, and people like all the different use cases for which they want to use mobikwik. In this business, how we make money is basically we have a take rate business. Just like credit card को swipe करते हैं तो बैंक को एक MDR लगता है, इसी तरह पेमेंट्स में अगर आप मोबिक्विक वॉलेट यूज करते हैं तो भी चार्ज एन MDR टू द मर्चेंट, एंड दैट MDR इज मेन आर रेवेन्यू. तो वो जनरली MDR 0.7%, 0.8% की रेंज में रहता है, एंड दिस इज व्हाट इज शोन इन द नंबर रेवेन्यू फ्रॉम पेमेंट सर्विसेज.
If you see from FY23, 24, 3 months of FY25, it has continued to grow. In the last quarter, AMJ, it is almost 0.8%. ये हमारा ग्रॉस इनकम है. इसका मतलब है कि 25,000 करोड़ का 80 पैसा वो हमारी रेवेन्यू है. उसके बाद जो हमारे डायरेक्ट कॉस्ट है वो सारे जो हम बैंक्स को पे करते हैं, कार्ड कंपनीज को पे करते हैं, और जो भी आप लोगों को डिस्काउंट एंड कैशबैक पसंद आते हैं, those we deduct from the direct cost and then we get to the final margin, net margin, which is anywhere from 18%, 19% to last quarter में it is 16%. तो ये एक myth है कि payments companies don't make money. We have always been making money in payments, and this is consistent across many years. It may be up and down, but it is, if you see 18%, 19%, 16%, which means कि if I process 10,000 crores in 1 month, so I have 16 crores, 17 crores of profit in that month, just from payments. तो ये business हमने grow किया है. I think it will continue to grow. But obviously we decided कि this is not the only business we want to do, because एक बार customer app पे आता है, so there is so many other things we can offer. We had opportunity कि हम उनको e-commerce का कोई product दे दें, या travel का कोई product दे दें, या किसी और category का दे दें, but हमने वो नहीं किया. What we wanted to see, first understand कि ये जो customers हैं ये हैं कौन, and इनका profile क्या है. तो if you see our customer base, and this is more India specific, कि India is a highly unequal country. India में जो top के लोग हैं, आप और मेरे जैसे जो लोग हैं, we have everything. हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास बैंकिंग भी है, और बैंक हमें कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना हो वो हमें कॉल करके प्रोवाइड कर देता है. आपको लोन चाहिए, आप फोन कीजिए, एक्चुअली फोन भी करने की जरूरत नहीं है, आपको ही फोन आ जाएगा, आप लोन ले लेंगे. आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, वो भी आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, आपको फोन करेगा, बिकॉज उनके पास उनको पता है कि कौन क्रेडिट कार्ड अफोर्ड कर सकता है और किसको वो देना चाहते हैं. सेम वे फाइनेंशियल एडवाइस, किसी भी तरह की एडवाइस, आपके पास पैसे होंगे तो कोई एडवाइस करेगा, पैसे नहीं होंगे तो कोई बैंक आपको एडवाइस नहीं करेगा. बट दिस इज नॉट रियल इंडिया. ये रियल इंडिया नहीं है. ये हम सिर्फ टॉप की बात कर रहे हैं, टॉप 20-25 मिलियन, मेरी सम पार्ट ऑफ नेक्स्ट 90-100 मिलियन, जो कि टॉप के 8 से 10 करोड़ है. उनके पास सब कुछ है, सारे ऑप्शंस हैं, सारी अपॉर्चुनिटी हैं. वो दिल्ली में, बॉम्बे में, बैंगलोर में रहते हैं. बट अगर आप ओवरऑल इंडिया का मिडिल क्लास देखें या लोअर मिडिल क्लास देखें, दैट इज स्प्रेड एवरीवेयर. इट्स एक्चुअली नॉट लिविंग इन मेट्रोज, it is actually beyond the metros. And these are the people who earn between 30,000 to, let's say, 1 lakh, 1.25 lakhs in a month. And it's not like they're poor. They have the money. They have a smartphone. And इनमें से काफी लोग UPI या डिजिटल पेमेंट भी कर रहे हैं, बट इनके पास बैंकिंग प्रोडक्ट्स का एक्सेस नहीं है. So we decided to build another business, which is a distribution business, where we focus on distribution of the right financial product from our partners like banks, NBFCs, to our customers. And usme the first distribution product that we have built is on credit. And credit mein, we have built multiple products. The first product that we built, the first product we have built is Zip, which we started few years back. So इसमें the need that we were fulfilling is कि many people in India, many customers of mobikwik don't have a credit card. But India में, like especially in that segment, at the end of the month you're always short of money. आपके पास पैसा नहीं होता और आपके पास credit card तो है नहीं. So हमने सोचा why not create a product where, which is called buy now pay later. We give a small limit, 5,000, 10,000 रुपए, जो कि आप अपने डेली लाइफ यूज केसेस के लिए, बिल पेमेंट्स, फूड, ग्रोसरी, किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं. तो हमें लगा कि बहुत डिमांड होगी, एंड वी वर राइट. वी वर प्रूवन राइट. ऑलमोस्ट 6 million plus customers signed up for this over the period of time. And because इसका सक्सेस इतना ज़्यादा हुआ, it was so successful, we decided कि why not actually
actually give a credit card also. And that is what first card is, which is announced and it is in the works. It's about to go live. Why I call this first card is basically, of course, it's in partnership with a bank because we are not a bank or an NBFC. In India, like very few people have a credit card. Everybody wants a credit card, but most people are not eligible for a credit card. So we decided why not have a secured credit card, and also credit card का usage में भी problem होती है कि credit card doesn't work everywhere. So we made it a RuPay credit card which works on UPI. So this first card is unique in many ways. It is a secured card, it is a RuPay card, so it works on UPI. So effectively, you put an FD in a bank, and against that FD you get a card. आप बोलोगे यार मैं तो बैंक से डायरेक्टली करता हूँ, why should I put an FD to get a credit card? मेरे पास अलग से क्रेडिट कार्ड है. तो उसका मैं सिंपल आंसर दूंगा कि आपने सेविंग्स में जो भी आप यूपीआई कर रहे हो उस पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है इस एफडी में उससे बेटर मिलेगा और उसी के अगेंस्ट आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा. सो एंड देन बिकॉज आप ये क्रेडिट कार्ड यूपीआई पे यूज कर रहे हो तो आपकी सेविंग्स बैंक अकाउंट की जो यूपीआई ट्रांजेक्शन हैं उस पर आप कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता. इस कार्ड में आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा. क्यों मिलेगा? बिकॉज RuPay credit card UPI पे there is an India, there is an income. So again, this is an example of who we are. हम मल्टीपल चीजें, मल्टीपल वायर्स जोड़ के ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे कस्टमर्स को चाहिए. We are also of course distributing other products जैसे पर्सनल लोन, शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन, विद EMI. देखिए उसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप ये सोचते होंगे कि यार इंडिया में अनसिक्योर्ड लोन तो अभी क्या हो रहा है, रिस्की है ये वो, बट दैट्स अ सीजनल थिंग. इफ यू थिंक अबाउट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, इवन यू इफ यू वांट अ लोन एट 1 AM 1 बजे आपको बैंक अकाउंट में पैसे चाहिए, है कोई बैंक जो आपको देगा? कोई बैंक नहीं देगा. बट मोबिक्विक के जो पार्टनर्स हैं वो आपको देंगे बिकॉज हमने एंड टू एंड डिजिटल बनाया. ये डिजिटल की अपॉर्चुनिटी है. एंड ऑब्वियसली आप तो मेट्रो में बैठे हैं, आपको 1 बजे करने की जरूरत नहीं, आप अगले दिन जाके बैंक में जाएंगे आपको मिल जाएगा. बट हम उन कस्टमर्स की बात कर रहे हैं जो मेट्रोज में नहीं रहते, जो दूर दराज के एरियाज में रहते हैं, उनके पास उनको बैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं करता. सो देयर द ओनली ऑप्शन इज you go on mobikwik, you apply for a loan and we have partners who underwrite that, जो इन कस्टमर्स का बिहेवियर देख के, उनका डेटा देख के डिसाइड करते हैं कि किसको लोन देना है, किसको नहीं लोन देना है, और वो उस लोन कस्टमर को इमीडिएटली मिल जाता है. सेम चीज हम दुकानदारों के लिए कर रहे हैं, मर्चेंट्स के लिए, स्मॉल मर्चेंट्स के लिए, जिसको हम मर्चेंट कैश एडवांस करते हैं. बट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उसकी विजन सिर्फ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. क्रेडिट से हमने स्टार्ट किया है जरूर, बट हम चाहते हैं कि अदर एरियाज में भी. कौन सा अदर एरिया है? द अदर एरिया इज सेविंग्स. आज मोबिक्विक का IPO खुला है तो लोग अप्लाई कर रहे हैं रिटेल में, सब्सक्रिप्शन आ रहा है. अब सब लोगों को ये नॉलेज नहीं है. एवरीबडी कैन नॉट पुट मनी इन द स्टॉक मार्केट. उनको तो सिंपल चीजें चाहिए और उससे भी पहले उनको तो समझ भी नहीं है कि ये सेफ भी है नहीं, कि कहाँ पे डालना चाहिए, कहाँ पे नहीं डालना चाहिए. तो उसमें मोबिक्विक हैज कम अप विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स. तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग बिफोर इवन आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, सेविंग स्टार्ट करें, हमने एक प्रोडक्ट बनाया लेंस. आप सब लोग आई एम श्योर बैंक स्टेटमेंट अभी ऐप में देखते होंगे. कुछ साल पहले जब मैं कॉलेज में था तो मैं अपने फादर के साथ, जब स्टूडेंट था तो फादर के साथ PNB की ब्रांच में जाता था पंजाबी बाग में, और वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पासबुक डालते थे और तब बैंक स्टेटमेंट अपडेट होती थी. अब तब से अब काफ़ी तरक्की हो गई है. आप अपने जो भी अकाउंट है उसकी ऐप खोलते हैं, उसमें अपनी स्टेटमेंट देखते हैं. पर उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस हैं बिकॉज उन ऐप्स का यूजर एक्सपीरियंस
हर एक का अलग अलग है। हम तुम जैसे लोग फिर भी उसको ओवरकम कर सकते हैं, बट जब हम स्टैंडर्ड लोगों की बात करें उनके लिए इतना आसान नहीं है। बार बार पिन जनरेट करना, बार बार चीज़ें चेंज करना, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन होती है उसमें, और अलग अलग ऐप के अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो हमने सोचा कि अकाउंट एग्रीगेटर को यूज करके हम एक ऐसा सोल्यूशन बनाएं कि आप इंडिया में किसी भी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आप ऐप पे देख सकते हो, ऑन मोबिक्विक ऐप। इट साउंड्स अनबिलीवेबल कि यू कैन रिप्लेस ऑल योर बैंक एप्स विद मोबिक्विक जस्ट फॉर व्यूइंग योर बैंक स्टेटमेंट। एंड बैंक आपको स्टेटमेंट तो भेजता ही होगा, वो कैसे भेजता है एक्सेल में, समझ भी नहीं आता है कि वो नरेशन में क्या क्या चीज है। तो मोबिक्विक ने बहुत काम किया है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या सेविंग्स है, क्या कैश विड्रॉल है, क्या बैंक चार्जेस है, क्या डिविडेंड है। तो आपको एक बैंक स्टेटमेंट नहीं मिलती, आपको एक स्मार्ट बैंक स्टेटमेंट मिलती है जिसमें आपका सब कुछ ऑलरेडी कैटेगराइज है, सारी कुछ चीजें ऑटोमेटिकली सेटअप है, जस्ट एट द क्लिक ऑफ द बटन। तो आप इमेजिन कीजिए कि इसका कितना पोटेंशियल है पूरे इंडिया लेवल पे। इसके ऊपर हम AI यूज करके और भी इनोवेशन लेके आ रहे हैं जिससे कि आपको सर्च करने की भी जरूरत ना पड़े। आप जस्ट जैसे आप किसी से बात करते हैं, आप इससे बात कर सकें। तो इन अ वे हमारा विजन है कि हम इसको एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनाएं आपके लिए। पर अगर ये फाइनेंशियल एडवाइजर बन रहा है तो ये क्या एडवाइस करेगा? ये आपको एडवाइस करेगा कि आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर पैसे हैं जो कि 2% 3% इंटरेस्ट आ रहा है, उसको आप कहाँ पे लगा सकते हो, कहाँ पे लगा सकते हो जिससे आपका कुछ रिटर्न मिले। तो उसमें एक प्रोडक्ट हमने बनाया है फिक्स डिपॉजिट। तो हमने कई बैंक और एनबीएफसी के साथ पार्टनर किया है जो कि फिक्स डिपॉजिट इशू करती है, और आप अपने मोबिक्विक ऐप से बैठे बैठे किसी भी बैंक का जो हमारा पार्टनर है उसका एफडी खोल सकते हैं। आप सबने एफडी तो किया ही होगा, बट आप एफडी नॉर्मली उसी अकाउंट का करते हो जिसमें आपने बैंक खोला। ये आपके पास अब पावर है कि आपको किसी का अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। आप मोबिक्विक ऐप से डायरेक्टली 8% 9% जितना भी रिटर्न जो भी देना चाहता है अपनी रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये बहुत सारे लोग अब इसको इस सर्विस को यूज कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास लाइसेंस है इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का, हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड है इन डिजिटल फॉर्म जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। द फोकस इज कि इफ यू आर समबडी हु इज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिसको बैंक अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करता है, तो मोबिक्विक बिकम्स लाइक अ DSA and works with all these banks and NBFCs and as a customer इसको प्रोवाइड करता है। क्योंकि DSA का बिजनेस मॉडल प्रूवन बिजनेस मॉडल है 20 सालों से 100 सालों से। तो मोबिक्विक इज अ डिजिटल DSA। सो दिस इज द सेकेंड बिजनेस ऑफ मोबिक्विक। सो मोबिक्विक हैज ओनली 2 बिजनेसेस, पेमेंट्स जहाँ पे मैंने आपको बिजनेस मॉडल समझाया, एंड द सेकेंड इज दैट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हम एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह कुछ एक छोटा कमीशन कमाते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट के डिस्ट्रीब्यूशन में वो 30 पैसे होगा, 40 पैसे होगा। अगर मैं म्यूचुअल फंड में बोलूँ तो और कम होगा, गोल्ड में कुछ होगा, और अगर मैं क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, लोन डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो वो ज़्यादा होगा, 1% 2% या 3% होगा। तो अब मैं फाइनेंशियल को कवर करने के लिए आई विल इनवाइट माय कॉलीग। Thank you, Vipin. So as Vipin said, we have two businesses, right? One payment, जहाँ पे हमें MDR के फॉर्म में रेवेन्यू हम कमाते हैं, and the other business is the distribution business. So the payment business, Vipin has already covered the numbers. हमारे पास 161 million users हैं as on June 2024. We have 4.26 million merchants on our platform. इस
क्वार्टर अकेले में वी हैव डन 25,000 करोड़ का हमने GMV किया, 45,000 करोड़ GMV वी हैव डन, एंड वी मेड अ रेवेन्यू ऑफ 171 crores in just first quarter from the payment business. Last year, for the entire year, we have done 317 crores of revenue. इस पे हमारी दो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक बैंक प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है और एक यूजर इंसेंटिव कॉस्ट होती है, जो हम यूजर्स को बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ अ लॉयल्टी प्रोग्राम एंगेज करते हैं कि दे ट्रांजैक्ट मोर ऑन आवर प्लेटफॉर्म. वो सारी डायरेक्ट कॉस्ट हटा दें तो वी मेड 19% ग्रॉस मार्जिन in the entire year FY 2024 and 16% in this last quarter. तो ये तो एक बिजनेस हो गया जिससे हम यूजर्स एक्वायर करते हैं और सारी कॉस्ट हम यहीं पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे यूजर इंसेंटिव हो गया, राइट. दूसरा बिजनेस ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है. डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस पे जैसे पिछले स्लाइड पे आपने देखा होगा कि हमारे 161 मिलियन यूजर्स हैं, 16 करोड़ यूजर्स हैं. उसमें से हम लोगों ने 6.23 मिलियन यूजर्स को स्मॉलर टिकट साइज प्रोडक्ट लोन्स विच इज हमने ऑलरेडी दे दिए. दे आर एक्टिव ऑन आवर प्लेटफॉर्म, 6.23 मिलियन यूजर्स. और जो लार्जर टेन्योर प्रोडक्ट है, 12 मंथ का एवरेज टेन्योर है उसका, 2001 मिलियन यूजर्स, 10 लाख यूजर्स हैं जो एक्टिवली यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को. सो लास्ट ईयर दैट इज इन FY 2024, 2024 में हमने 9,000 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है दोनों प्रोडक्ट को मिला के. यू कैन सी द टॉप मिडिल चार्ट एंड द टॉप राइट चार्ट. तो इन FY 24 दोनों को मिला के वी हैव डन 9,000 करोड़ ऑफ डिसबर्समेंट. उस पे हमने FY 24 में वी हैव मेड 557 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, प्राइमरली इन फॉर्म ऑफ कमीशन. जैसे विपिन ने हाईलाइट किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन के साइड पे वो प्राइमरली क्रेडिट से आया, बट देयर आर अदर प्रोडक्ट्स जिन पे ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन इट, जैसे इंश्योरेंस है, वेल्थ है, जो एडिशनल रेवेन्यू आगे के सालों में दिखेगा. इस 557 करोड़ पे जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे, वो 300 करोड़ की कॉस्ट थी 2024 में. उसमें सारी कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट, यूजर्स को कैसे किस यूजर्स को हमें लोन देनी है नहीं देनी है, जो अंडरराइटिंग प्रोसेस होती है उसकी भी कॉस्ट होती है, राइट. तो वो सारी कॉस्ट अगर हम हटा दें, कलेक्शन कॉस्ट, अंडरराइटिंग कॉस्ट या क्रेडिट कॉस्ट, तो हमने 45% का मार्जिन बनाया, 45% इन FY 24. इस लास्ट रिसेंट क्वार्टर में, दैट इज इन अप्रैल मई जून क्वार्टर, वी मेड 44%, 44% का हमने ग्रॉस मार्जिन बनाया. तो आप देख सकते हो कि पेमेंट बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हमारा ग्रॉस मार्जिन ऑलमोस्ट डबल है. तो जैसे जैसे हम और प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, हमारा ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होता जाएगा कंसोलिडेटेड लेवल पे भी. ये दोनों बिजनेसेस को मिला के व्यू है. एक 75 करोड़ का रेवेन्यू बनाया हमने 2024 में, उसके ऊपर 15 करोड़ का अदर इनकम है, तो 890 करोड़ का टोटल रेवेन्यू. इस क्वार्टर में हमने ऑलरेडी 345 करोड़, 345 करोड़ का रेवेन्यू वी हैव ऑलरेडी मेड. इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 4, so then we are like somewhere 1,300 to 1,400 crores of revenue this year. On this, you can see on a consolidated level, we have made 37% contribution profit, excluding all the direct costs, right? So direct costs from the payment businesses are, payment business is user incentive and the payment gateway cost, and the direct cost on the distribution side is the lending related expense. If we deduct all these direct expenses, we made 37% in FY 24 and 31% in the recent quarter. This is a view on our fixed cost, how the fixed cost is trending, because fixed cost you should look the absolute number as a percentage of revenue, because our revenue is growing significantly. Last year we grew 59%. तो हमारा कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो FY 24 में this cost, fixed cost as a percentage of revenue was 47%, right? This has come down to 30% in the recent quarter. In the April, May, June quarter, this cost is as a percentage of revenue is around 30%. And going forward also, because of the economy of scale, right? We are growing our revenue, and this cost will not grow that much, right? Because of the economy of scale. So this will keep coming down in future. In terms of EBITDA,
in last year we made 37 crores of EBITDA on a revenue of 890 crores. So nearly 4.2% EBITDA margin. This quarter we are at 2.2 crores, just almost break even. It's primarily because of the fixed cost. अगर आप fixed cost देखोगे, last year 300 crore था पूरे साल का. In this quarter that fixed cost is nearly 100 crores. So that means 25 to 30% increase हुआ है fixed cost. Right? तो उसी की वजह से थोड़ा सा marginally EBITDA margin कम है, but going forward as we keep growing the revenue, these margins will keep expanding. The EBITDA margin I am talking about, right? In terms of PAT also, last year हमने 14 करोड़ का PAT बनाया FY24 में. इस quarter में slightly negative है, 6 करोड़ का loss है, which basically obviously as the economy of scale I was talking about, and will in the future years this will basically be profitable. इस साल क्योंकि indirect cost बढ़ी है तो वो EBITDA में flow हुई है, EBITDA से नीचे PAT में flow हुई है. EBITDA और PAT के बीच में जो difference है वो depreciation and finance cost है. So हमारा payment business जैसे जैसे grow है तो हमें कुछ working capital line होती है हमारी जो उससे support करते हैं, उसकी वजह से marginally negative है. So this is on the financial. On the issue, so as Mithul said earlier, we are raising 572 crores, all primary. No one is selling, even existing shareholders or promoters. So entire 572 crores will go into company's growth. और वो किन किन एरियाज में हम स्पेंड करने वाले हैं या यूज करने वाले हैं उसका हमने ब्रेकअप भी दिया हुआ है इसमें. So 150 crores out of 572 crores we are going to use in financial services business. 135 crores we are going to use in the payment service business for the growth of the payment service business. 107 करोड़ हमने न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, जैसे कि AI, machine learning based algorithm and product and technology. So basically nowadays like AI and ML are a new buzzword, right? Everyone is talking about it. We started using and building these technology or products way back in 2017. तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है जिसमें हम क्रेडिट और लोगों को इवैल्यूएट करते हैं कि whether they are eligible for the loans or not, वो हमने मॉडल 2017 में बनाना शुरू कर दिया. Those are based on these new age technologies like AI and ML. So we are keeping 107 crores for that segment and 70 करोड़ हमने रखा हुआ है capital expenditure for our payment devices जो sound boxes विपिन ने बात करी थी, sound boxes की या EDC machines etc etc. So this is the breakup of our 572 crores of total primary fundraise from this IPO. Thank you very much, and we can take the questions now. इन्वेस्टर पहले ही अपना हाथ दोबारा कैसे फेस करेगा कि कंपनी आगे अच्छा करे. कंपनी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आप समझते हैं. हाँ, तो बिल्कुल आपका बहुत सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है. और ये सवाल हमें इन्वेस्टर से भी किया जब हम IPO का रोड शो कर रहे थे. तो मैं आपको वही जवाब दूंगा जो मैंने उनको दिया था, वो ये कि देखिए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं इंडिया में वो बढ़ती ही जा रही है क्योंकि डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है. चाहे वो डिजिटल पेमेंट हो, चाहे डिजिटल फाइनेंस हो, डिजिटल लेंडिंग हो, आप हर काम ऐप से कर रहे हैं. आप बैंक की ब्रांच में तो जा नहीं रहे और आप शायद बैंक की ऐप से भी नहीं कर रहे काम, किसी और की ऐप से कर रहे हैं पेमेंट, चाहे मोबिक्विक से कर रहे हैं, मोबिक्विक से आप FD भी बुक कर रहे हैं. तो ये एक मैक्रो ट्रेंड है जो इरिवर्सिबल और इसमें कंपनीज बन रही हैं और बनेंगी. मोबिक्विक उनमें से एक कंपनी जो आपने देखी है, इससे पहले शायद आपने एक कंपनी देखी, बट इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनी है. तो ये सोचना कि एक कंपनी का एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं रहा तो बाकी सारी कंपनी का भी अच्छा नहीं होगा, तो वो ही गलत है. जैसा कि सेम वे अगर आप ये सोचते हैं कि किसी एक बैंक का अगर कुछ खराब हो गया तो सारा बैंकिंग सिस्टम इसका मतलब नहीं है कि खराब है. सेम वे अगर आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो फाइनेंस की दुनिया में बढ़ती रहेगी आगे, तो आपको बस फिर उसके बाद वो देखना है कि कौन सी कंपनीज इसमें अच्छा काम कर रही हैं या अच्छा काम करेंगी. और वो हमने अपने प्रोस्पेक्टस में डाल के दिखाया है कि
देखिए हमारी इंडस्ट्री में हम एक इकलौती कंपनी है जिन्होंने प्रॉफिटेबल ईयर करके दिखाया है। आज तक किसी और कंपनी ने प्रॉफिटेबल क्वार्टर भी नहीं करके दिखाया, और हम सबसे बड़े प्लेयर नहीं हैं, बट फिर भी हमने ये करके दिखाया है। तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये बिजनेस बिना कैश बर्न के ये बहुत सालों तक बढ़ सकता है, बिकॉज अभी भी डिजिटल की जो पेनिट्रेशन है इंडिया में वो बहुत कम है। तो इसी को देखते हुए हमें इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया। सर साइज ऑफ पब्लिक इशू क्या होगा सर, एंड सेकंड थिंग कि पीपल अपना क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Yeah, total size of the issue is 572 crore. Return, I mean, it's market driven, so we can't comment on spot returns against connect. I have one question. Why the company has significantly reduced the IPO size? The company has become profitable, as you can see, and is not loss making. In last quarter में एक minor PAT loss है, but otherwise if you look at it, the company has become sustainable and profitable. तो कंपनी को जितना कैश हमने 21 में प्लान किया था उतने की जरूरत नहीं है। तब से हमने 300 करोड़ से 890 करोड़ का रेवेन्यू खींच लिया है, और जो हमारा लॉस था तब वो 128 करोड़ था। अब वो लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट में बदल गया, 14 करोड़ प्रॉफिट में बदल गया। तो इसलिए कंपनी को नई जरूरत है अभी इतने कैश की, तो इसलिए कंपनी ने इसके साइज को कम किया। सर एक एक करके आई थिंक हमारी टीम मॉडरेट कर लेगी थोड़ा। Just one question related to. In future, if you are planning to raise fund to debt market or something, or it will be sufficient to sustain growth? So we are expecting this will be sufficient for our growth plans for the next 2 years. We are not planning to do any other debt raising right now. We continue to have working capital lines from our banking partners, but that is just one day worth of working capital, because the payment money like on the weekend, अगर आप लोग सब IPL मैच देखेंगे, जोमेटो स्विगी पे ऑर्डरिंग करेंगे, पेमेंट थ्रू मोबिक्विक करेंगे, तो उसके पैसे हमें तो वीकेंड पे मिलते नहीं हैं, तो हमें उसका वर्किंग कैपिटल देके रखना पड़ता है फॉर बैंकिंग हॉलीडेज। How do you see the future of mobikwik and investor? हेलो, आई थिंक मैं ये बताना चाहती हूँ कि रिटेल सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा हो चुका है एंड पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। लास्ट मैंने देखा था तो 5x 10x पे हम पहुँच गए थे। आई थिंक जो नए इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दे आर शोइंग अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन आवर नंबर्स, इन आवर प्रेजेंटेशन, इन आवर बिजनेस मॉडल, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। एंड आई थिंक दैट you can track how the offer does between today and Friday. I think that should give you a sense. It is all a question of demand and supply. If there are more buyers, then hopefully the stock should do well for the investors. तो इसमें मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि वो इरेस्पेक्टिव है कि आप देखिए 15 साल से हम ये कंपनी बनाए हैं, मैं और पार्टनर, और आज की डेट में वी आर स्टिल द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। तो और हम कोई अपना शेयर नहीं बेचते, हम प्रमोटर हैं। जनरली ऐसे न्यू एज टेक कंपनीज में कोई प्रमोटर होते नहीं, तो दैट शुड गिव यू कॉन्फिडेंस कि यार हम तो यही हैं, हम मार्केट में आ जरूर रहे हैं, बट हमारा काम है कंपनी को बढ़ाते जाना, और बीइंग द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हम करते रहेंगे। एक क्वेश्चन अराउंड द peer-to-peer lending in mobikwik extra. I think September में भी reported कि mobikwik extra भी users को difficulty आ रही है taking out the money और कुछ मतलब it was sorted. तो P2P lending के अंदर like given the whole RBI norms, P2P lending के अंदर mobikwik का क्या प्लान रहेगा आगे? So mobikwik P2P lending नहीं करता है। mobikwik extra is powered by our partner, जो कि एक लाइसेंस एंटिटी है, NBFC P2P लाइसेंस है उनके पास RBI का, और उसकी रेगुलेशन RBI ने जरूर चेंज की है, जिससे कई यूजर्स को दिक्कत भी आई, बिकॉज जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो उस एक्सपेक्टेशन से चेंज हो गया, बट दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ रेगुलेशन एंड रेगुलेटरी चेंज।
तो I cannot comment on the specific change in the regulation because हम उस चीज में हम regulated हैं नहीं, हम एक उस product के एक distributor हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी future bright है। It's just that कि अभी उसका जो framework है या customer expectation है वो change हो गया। तो मतलब it will still be a part of mobikwik app. It is still there on that. Again, I think I'll just remind you that just like this product, there are many other financial products on mobikwik app. All of the products, whether it's FD, mutual fund, digital gold, or even loan products, we are not the manufacturer. The manufacturer is a financial institution who is regulated by RBI and has the rights to build that product. So, as and when their guidelines for their products will change or their pricing norms will change, we will have to bring out those changed terms on our app. Again, we are a digital distributor or a DSA, not the manufacturer of the product. Can I have the mic here? Yeah. Good afternoon. This is Sanjay Agarwal. So congratulations for your IPO. I was just going through you're talking about the rupee card and the first card. So normally when you're talking about cards, so every bank is charging today. They're giving you free and they're charging you an annual fee, and they say that if you spend, then there's going to be waived off, right? But the traveler is looking for a lounge facility. Suppose bird lounges, or so have you got some ties with bird lounges, or are you looking for, this is about, I'm talking about international or domestic travel. So one thing. Secondly, about what you said about gold. So is it going to be a gold ETF or you're planning to launch? And then about the insurance. So are you looking forward to buy a company in insurance? What's No, so we are not looking forward to buy any company. Like I said, and other people had earlier asked also, are you planning to have your own NBFC, or are you planning to have your own insurance company? Are you actually planning to have your own mutual fund? The answer is no. Clear no. Because I explained that our role is that of a distributor, DSA. I am getting customers who need multiple things. If I am offering fixed deposit, then I cannot, if I become a bank, then I can offer only one rate to all customers. But if I am a distributor, I can tie up with all the banks in the country and provide their fixed deposit. Same for mutual funds, same for loans, and same for insurance. So you give health as well as the... All products that our customers need, we just do the tie-up. We are the distributor, customer comes. Our strength is technology and digital. My customer active. He comes, he chooses what he wants. So we give customer the advantage of choice. You choose what you want at your price, and you select the partner, and you do all the steps that are necessary. So that is the role that we are continuing to play. As far as the card is concerned, the card is still not yet live, and many of the features and advantages will be revealed as we go forward. But the main purpose of the card is, I would argue, is not for lounges or like the fees, because this card, at least the way we are thinking, is going to be a free card for forever, lifetime free. But its main use is you link it on UPI and you use it all your UPI transactions from this, and that is where we see a significant opportunity. And this SBM, you'll have to open an FD in SBM? Yes. So basically the main concept is whoever is the partner bank, in this case it's SBM, but there will be more, where you open an FD. And let's say आपने 50,000 की FD खोली, तो एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए उसका रेट ऑफ रिटर्न उस पर 6% है, तो आपको 6% FD का रिटर्न मिलेगा. साथ में अगेंस्ट द 50,000 you get little less, maybe 49,000 limit on your credit card. तो आपके दोनों काम हो गए. You are getting good return on the FD and you are getting a card which you use on UPI. But when you use it on UPI, you will also earn rewards. Because normally जब आप बैंक से UPI करते हैं आपको rewards नहीं मिलता है, इसमें वो भी मिलेगा. And since it's going to be listed this company, so are you going to give the ESOPs to your employees in the future? We have already given ESOPs to our employees. It is already fully disclosed in our website. Thank you. Hi Vipin, hi Pasna. I have a question on extra. So I think
can see that Extra has been impacted like the other P2P products in the market. How has that impacted your financials? Because of course you have disclosed financials till first Q1. Post that, what kind of impact have you seen from the closure of Extra? Because I am assuming that you're no longer taking investment for that product. And that may have impacted even your lending that you may be doing with that money to your borrowers, right? So if you can talk about that, and I have one more question. So we have disclosed what all we do with respect to Extra, and we have many lending partners, not just on the P2P side. So that's one. And second is, you said we have stopped taking investment. Extra is not true. The product is truly alive and well. You can check it out on that. You have taken investments post. The product has been changed basis the change in regulatory guidelines, which is what I answered to the previous gentleman. Because basically the expectation from the regulator is different in terms of how it should work. But again, these changes have come from our partner, and we are not in direct touch with the regulator. So that is clear. All I'm asking is, but you were reaching out to the customer. We cannot disclose any further about Extra or any further commercial questions that you are asking, because those, when the financials get revealed eventually, that will be there to see. Sure. I have one more question about the other lending partners that you spoke about. You just called it seasonal, right? That the regulation about unsecured lending. But we are seeing that there has been a lot of pressure on NBFCs, the larger NBFCs, to reduce their exposure to 20% only on unsecured loans. So is that impacting your lending business as well, or are you really bullish on that? So no business which is working with partners can be completely free from any exposure to or any impact from when the ecosystem is changing. The point I was making is that for 1 quarter, 2 quarters, 3 quarters, for 1 year, for 4 quarters, 5 quarters, this can happen. That, for example, what the regulator says on secured loans, etc. However, the point I was making is, being a distributor, we work with all kinds of lenders, and on the other side, we have all kinds of customers. So we are very bullish on the long run in terms of distribution of loan business. I don't think anything fundamental changes there. Are you shifting your focus to merchant lending more because of the consumer loan getting? We have not disclosed anything like that, so I'm sorry, I cannot comment. Thank you. Hi, Vasan. So my question is related to your financials. So I can see the company reported profit of 14 crores in the previous financial year. So is the profit sustainable? Because in the June quarter, the company reported loss of 626 crores. So how was the first half of FY25? If you can throw light on it. See, how you look at mobikwik in terms of its financials, you look at revenue, and then you look at margins, which we have talked about, both in the payment business and also in the financial business, financial services business, and then EBITDA, and then PAT. mobikwik is a high growth company, and so we have demonstrated that we will continue to grow. Even in this quarter, we have continued to grow. And our margins are there. So our margins overall at the business level is 30%. So if I have my revenue is 890 crores, that means 30% of that is my net margin. Uske niche I have fixed cost. However, being a growth company, we reinvest all of that profit, net margin, into the growth of the company. So we hire more people, we hire more engineers, we hire more sales people. The idea is not necessarily to get out a large amount of PAT or large amount of EBITDA immediately. So the company still has a long way to go in terms of its growth prospects. So I would argue that, as long as our business is growing, our margins are same or growing, then our net margins are growing, and if our cost is not growing at the same pace, then we are profitable. So when you are sustainable, our margins are higher in this first quarter than the same quarter last year.
And so, but we have made more investment. Plus, we have taken some debt because we wanted to make some more investment. And therefore, the PAT looks slightly negative. But the long term, there's a lot of different kind of startups, a lot of different kind of fintech companies. mobikwik is the only one which has demonstrated profitability ever. So we are very confident that we will keep growing, but not necessarily by cash burn. That is the way we are building the business. So, sir, of your about your investments, there was a sizable chunk for growing the sound box thing, the QR sound box. So that market is already it has significant players. So what sort of investments will you be making from the IPO proceeds? How will you grow that business? The QR sound box business, that. Yeah, so during the presentation, Vipin had revealed that in the first quarter we added about 2 lakh new merchants. These are small merchants, kirana stores, right? And unlike the popular thought process, we don't think there is too much competition. I mean, India totally has about 50 million merchants, and right now most of them have only QR codes. The number of merchants in India is expected to double from 50 to 90 million in the next 5 to 6 years. That's number one. Number two, of the total merchants who are accepting digital payments, very few still have sound boxes or card machines. And I can tell you that of the 2 lakh new merchants that we acquired, I think a good 60,000-70,000 sound boxes we have deployed. We are finding that sure, in large cities like Delhi, Bombay, Bangalore, there are 1 or 2 competitors who have taken some market. But what happens is that there is always an experience issue. If the merchant is not having a good experience, they want to replace at least one of the 2 devices they have. So it's very easy for us to get that replacement business. And in tier 2 markets, there is no competition. So we are acquiring net new merchants who have never had a sound box. So tier 2 and non-metro cities, that will be somewhere you will be focusing. Yeah, that we mentioned in our RHP also, that a good chunk of our users and merchants are in tier 2 and beyond. And we continue to focus more over there. I have a small question on tech part. Just one question. About in recent time we have seen a lot of data breach and all. So what kind of precautionary and what kind of issues you are using for keeping a tab on that, on the data breach and all? So see, mobikwik is regulated by RBI, and we undergo significant level of audit from the regulators, including in place, in office, technical audit, all kinds of certifications. And they are meant to ensure that companies like mobikwik, which are in the business of technology and the business of data, that is the most important and a critical part. And so we take that very, very seriously. We have also have a clean track record in terms of compliance as far as the regulators are concerned, and that includes all levels, including process, including data, including security. And you have to rest assured that when you as a customer trust us with your money and with your financial information, that information is safe and it's also not being shared with any third party. One question came to my mind. PhonePe is ahead of you. PhonePe is ahead of you, and Paytm suffered some, compliance issues. So now PhonePe is there in the street, the hawker market. So you're not taking any steps to go ahead of PhonePe? So we are taking all steps. We have built our unique niche in terms of digital wallet, and we are not the biggest when it comes to UPI or comes to merchants. We know that, but I think what you have to look at is who's been able to build a business and who's been able to build a profit in this with the right balance and growth, but sustainable growth. And I think that is where we have total 700 plus people. So we compete with many large multinational funded corporations and still growing. So I'm confident that we will continue to take market share and grow into the future. Thank you. Thank you, Aryan. Thank you, Aryan. We are running short of time.